Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, a complete guide for ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हैं, फिर बहुत बड़ी अपडेट देखने को आई है आप लोग के लिए। यहाँ पर गुड न्यूज़ है फ्रेंड, जो कि आई है कॉग्निजेंट की तरफ से देखने के लिए। तो फाइनली स्टार्टेड सेंडिंग 11 जनवरी 22 डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग कन्फर्मेशन मेल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So friend, here you can see on my screen this type of mail you will receive. If not received yet, just wait for some days. Okay, whoever got the mail, like you will be onboarded in March, or you onboarded in February, or some like few of candidates received onboarding on 1st of April, so they extended to April also. But no need to worry friend, because you all have a chance for receiving 11th of January date of joining of. Okay, so let's discuss what type of mail you will receive if you not received yet. Your onboarding on 11 January 2022. Here you can see on my screen, this email is bring to your notice that your date of joining is scheduled on 11 January 2022. So let's discuss one important point, is that this mail is received by one of my subscriber whose date of joining mail is on he got first mail March 31st March 2022, but he received the date of joining in January 11th. Okay, सो आप लोग में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा अप्रैल में है, मेरा मार्च में है, मेरा फरवरी में है, तो क्या जिनका जनवरी में 11th में आ रहा है सर, क्या वो जनवरी वाले को ही केवल देखने को मिलेगा 11 जनवरी को? तो बता दूं, ऐसा नहीं है। जो लोग को भी देखने को आया फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में, सभी लोगों का जो है मोस्ट ऑफ द चांसेस और हाई चांसेस है कि आपका जो है 11th ऑफ जनवरी ही आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने वाला है। सो in this interim period, please complete the PGB document upload and pre-joining forms if you are yet to do so. If already done, please wait till you hear from us. Please stay assured to receive an update on your scheduled date of joining, and do write to us if you have any only if you don't hear further into the regard beyond 29th December 2021. Okay, सो फ्रेंड, अगर आप लोग के पास इसके बाद कुछ भी अगर मेल देखने को नहीं है, तभी आप लोग जो फ्रेंड उन्हें अप्रोच करेंगे, देखेंगे। फ्रेंड प्लीज स्टे अश्योर्ड टू रिसीव एन अपडेट ऑन योर शेड्यूल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड डू राइट टू अस ओनली इफ यू डोंट हेयर फर्दर इन द रिगार्ड बियॉन्ड 29 दिसंबर 2021। ओके, तो आपके पास फ्रेंड इस तरह का अपडेट देखने को आएगा। सो लेट्स बिगिन विद योर सम ऑफ द डाउट्स। ओके, सो फ्रेंड हियर यू कैन सी, वेट आई एम जस्ट टेकिंग माई पेन ओवर हियर। ओके, so finally started sending wait, okay friend, and you should also keep this screenshot, okay, from where you should try to mail them if you have any query regarding Cognizant. Okay, so these three email is very important. Okay, so keep this with you. Okay, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो है इफ़ नॉट रिसीव्ड 11 जनवरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल, देन व्हाट्स नेक्स्ट डेट। बता दूं फ्रेंड, अगर मान लो बहुत लोग बोल रहे सर मेरे पास अभी अब तक अपडेट देखने को नहीं है, अगर आपके पास 11 जनवरी को नहीं आता, बता दो फ्रेंड जनवरी के एंड में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का जनवरी में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने वाला है। चाहे आप लोग किसी भी, बहुत लोग बोल रहे सर मैकेनिकल वालों का नहीं आ रहा है, केवल CSE IT वालों को ही 11 जनवरी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दूं, कॉग्निजेंट के नज़र में चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे CS हो, चाहे IT हो, ऑल आर सेम। ओके, वो बस बल्क में हायरिंग करती है। आप लोग किस बैकग्राउंड से हो, क्या आता है नहीं आता, उसको कुछ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो आपको ट्रेनिंग देकर ही आपको वो आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोग ये दिमाग से हटा देना कि मैं मैकेनिकल से, मैं सिविल से, मैं CS से हूँ, मैं IT से हूँ, इसलिए मैं फ्रेंड के झलते आ रहा है क्योंकि CS से मैकेनिकल से, इसलिए मैं डिले हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको नहीं जानती। कंपनी बस आपको सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद जो भी प्रोसेस आपका होने वाला, सब कुछ आपका रैंडम प्रोसेस होने वाला है। ओके, सो नो नीड टू वरी। ओके, तो ये जनवरी में आपका जो फ्रेंड, जनवरी में मे भी आपको 25 जनवरी देखने को मिलेगा, फिर एंड ऑफ दिस जनवरी मंथ में आप लोग को नेक्स्ट जो डेट है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट रिसीविंग दिस टाइप ऑफ मेल, ओके, देन ओनली यू विल बी रिसीविंग एंड ऑफ दिस जनवरी। ओके, एंड when they start sending for the next date of joining mail, then I will be update for all of you for the same. So okay, तो मेरे साथ बने रहना आप लोग। मैं आप लोगों को नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर कुछ आता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, बट राइट नाउ प्लीज कीप चेकिंग योर मेल रेगुलरली एंड डू कंप्लीट ऑल योर BGB प्रोसेस राइट नाउ। ओके, एंड यू इफ यू हैव एनी डाउट्स, just mail to this one. Okay,
to BCC and like CC and BCC, keep this 3 email ID with you all. Okay, they will reply you within 24 to 48 hours. Okay, so I think I discussed all the point. Okay, and if you have any doubt तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो. मिलते हैं आपको. टिल देन जय हिंद, जय भारत.